Good afternoon. So here you have a view of your 3D view of a cargo ship. Now this is a derrick which is Falcon derrick which can load up to 100 tons or more. This is normal derrick. So there's a general cargo ship operated with derricks. You make a union purchase and accordingly discharge it. So you can have a container plus general cargo. Here you have below your twin deck here. The lower hold has got different cargo, lighter cargo is there in the twin deck. That's your hatch opening and all. So these are all manual hatches which are shown here because this vessel is old. So you'll have manual hatches and derricks here. Nowadays you have McGregor hatches and all. So modern dry cargo ship designs maximize hold space. And typical mid-sized ship will have 5 or 6 holes. Three or four holes forward of the machinery space and superstructure, and one or two aft. The machinery space and superstructure are normally located about 3/4 aft. Older designs have 3 holes forward and two aft. The holes aft of the accommodation and machinery space will improve the trim of the vessel when partially loaded, so that your sufficient draft is there for stability and propeller immersion. Smaller freighters often have machinery and accommodation spaces aft of your cargo hold. And deadweight of your modern general cargo liners is between 9,000 to 25,000. Speed ranges are between 17 to 22 knots. And the trams are smaller and slower. The tram ships don't have a fixed route, they go wherever the cargo is available. And the speeds range from 12 to 18 knots. So hull depth is selected to provide for design draft and satisfy statutory freeboard requirements. The depth of DB is low so that your cargo space can be utilized. And one or more twin decks are there to facilitate flexibility of cargo loading and unloading. And then cargo segregation and improving stability. Your watertight doors in the bulkheads on twin deck levels are there, and denser cargo will be carried in lower holds where your high storage factor products can be stored. So high storage factor products can be stored on twin decks, and heavy or dense cargo will be in lower hold. You can have reefer spaces on the twin deck. So your hold spaces normally are the ratio of bale cubic to deadweight about 10 to 15% greater than overall storage factor carried to allow for rapid cargo handling and broken storage. So here is your grain and bale space capacity because that is the general cargo vessel. So grain capacity we can go inside wherever the openings, the areas between your cargo patterns, your grain can go there, but bales cannot go. So grain capacity is always more than bale capacity because bale capacity will have a lot of broken storages there. Then you have dunnage there. So either you will have cargo battens or you have dunnage to provide insulation. And holes are sized to provide cargo gear to limit the amount of cargo cubic feet storing gan for 60,000 cubic feet. Now your hatches are having combings to reduce the flooding of the hold from heavy seas. The covers are constructed of steel, which is McGregor hatches, and older vessels had wooden hatch covers. The main deck plating between hatches is not effective to provide longitudinal stretch and is sized to carry fairly light local loads. The deck plating output of hatches is therefore much heavier and exceeds 5/8 inch in thickness. Now this, as I had explained, this got composite framing. So there's longitudinal framing on the decks, the twin deck, the DBs, but transverse framing on the side plating.
That's why this is a combined framing system. The direct welding of frames to the shell plating may give rise to rippling of the shell plating. Therefore, welding sequence should be proper and rippling is reduced by scalloping the frames. Scalloping the frames is providing a cut in the frame so that your discontinuity stress is not there. Now, because you require transverse strength also, you have deck transverses fitted, the plate floors are fitted in DBs. The longitudinal framing is not usual at sides of cargo vessel because you will have broken stowage, as you might have to fit deep transfers 3 to 3.7 meters apart. I'll tell you what are these transverses. Let me show you what are these transverses before I continue further. Let's see where it is. Now this is a transfer framing system where you don't have longitudinals. I'll show you what is a longitudinal framing system. Now this is a longitudinal framing system where you have web frames here, and the full ring is spaced between 3 to 5 meters apart. So full ring is here. That is providing the transfer strength, the rings here. The longitudinals are providing the longitudinal strength, and these rings are providing the transfer strength. So these are spaced, the spacing between them is 3 to 5 meters apart. 5 meters is there, the distance in VLCCs, 3 meters in smaller ships. So because longitudinal framing is not usual there, because then you will have to have fitting of these deep transverses 3.7 meters apart, which I told you those rings. That will provide you a lot of broken storage. That's why longitudinal framing is not done in the sides of the general cargo vessel. Now, sealing is laid, as I had told you, is laid on the bilges and under hatchways. That is in the square of the hatch. So that is basically to absorb your water due to uh, the water droplets falling there. And the bilges are arranged with portable sections there with easily removable. Now your tank top extends to the ship side. Bilge wells are fitted of not less than 0.17 cubic meter capacity. So ceilings are laid for absorbing your cargo sweat. I'll just write there. Now bilge wells, the capacity of that bilge well will be not less than 0.17 cubic meters. Now, in certain ships where you don't have any ceilings, then your tank plating thickness is increased by 2 mm. And the minimum thickness of tank top plating is laid down in the rules. Wherever your forklift trucks are there, so your thickness of plating again is increased. Where ceiling is laid in the square of the hatch, it is to be not less than 65 mm thick in case of wooden ceiling, and should be directly laid on the inner bottom of the plating, being embedded in suitable composition, or you can lay battens so that you have a clear space for drainage, which is 12.5 mm at least.
Now, the cargo battens which we have seen on the sides are fitted in the holes from upper part of the bilge to the underside of beam knee and in all cargo spaces in the tween deck. And the thickness of these cargo battens will be 50 mm, and the distance between the cargo battens in rows will be not less than not exceeding 230 mm. So the distance between batten will not exceed 230 mm. So the salient features of general cargo vessel, normally it comes in your paper, is one, the tween deck is there. Two, the shear strake is straight. Three, it'll have cargo battens. Four, there'll be ceilings, bilge ceilings and tank top ceiling in the square of hatch. Your bilge wells will be of not less than 0.17 meter cube, and this will be compositely framed. So these are the salient features of general cargo vessel. सर एक क्वेश्चन है सर। सर ये लॉन्गिट्यूडनल फ्रेमिंग आपने बताया कि वो जो ट्रांसवर्स फ्रेमिंग है वो 3.7 मीटर्स पे होगी। नहीं नहीं, ऐसा है कि मैं पहले बता दूं ट्रांसवर्स क्या होता है। ट्रांसवर्स का मतलब ये जो चक्री दिख रही है ये ट्रांसवर्स है, और ये है लॉन्जिट्यूडनल ऊपर और नीचे और साइड में। तो अगर आपको साइड में ये लगाना होगा, सपोज ये जनरल कार्गो में लगाओ, तो ये ट्रांसवर्स फिट करने पड़ते हैं, और अगर इसको हम फिट करेंगे तो हमारा ब्रोकन स्टोरेज बढ़ जाएगा। देखो ऐसा है, शिप कंस्ट्रक्शन को समझना थोड़ा इजी नहीं होता, उसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है। इसलिए अगर आपने शिप कंस्ट्रक्शन किताब खोली, आप बोर होके बंद कर दोगे। ट्राई किया था कभी? ईजीआर खोलो, एक पेज पढ़ोगे बंद कर दो। इसमें बहुत कुछ है, आधा तो समझ में नहीं आता। वही तो मैं कह रहा हूँ, बाउंसर होता है, किताब खोलो ऊपर से उड़ जाता है। अभी तो उसको समझाना बहुत पड़ता है भाई। शिप कंस्ट्रक्शन उतना आसान नहीं है। कैलकुलेशन तो ठीक है भाई, कैलकुलेशन किया हो गया, बट इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। दैट इज द डिफिकल्टी है। अदरवाइज शिप कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं है, इसमें विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, और विजुअलाइजेशन लोग लैक करते हैं नॉर्मली। कई लोग कर लेते हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं वो विजुअलाइज ज्यादा करते हैं। अब जो तुमने क्वेश्चन पूछा है कि जो ट्रांसवर्स है वो 3.7 मीटर अपार्ट है, मतलब इसके और इसके बीच में 3.7 मीटर डिस्टेंस होगा ये ट्रांसवर्स में। अगर हमने लॉन्जिट्यूडनल फ्रेमिंग की, तो अगर हमने इसको लगाया तो हमारा ब्रोकन स्टोरेज बढ़ जाएगा। ब्रोकन स्टोरेज बढ़ जाएगा तो कार्गो कैपेसिटी कम हो जाएगी, इसलिए इसको हटा दिया और कंपोजिट फ्रेमिंग कर दिया। आया क्लियर हुआ कि नहीं? तो लॉन्गिट्यूडनल हटा दिया ना उसमें से? हाँ, लॉन्जिट्यूड साइड का लॉन्जिट्यूड हटा दिया ना, ऊपर और नीचे तो रहेगा, साइड में अच्छा, साइड का हटा दिया, ऊपर नीचे रहेगा। ओके सर। हाँ, कंपोजिट में ऊपर और नीचे रहेगा, साइड में नहीं रहेगा। ऊपर और नीचे तो रहेगा। डाउट सारे क्लियर कर लो बेटा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अभी डाउट क्लियर कर लो। नहीं सर, समझ आ गया। क्योंकि शिप कंस्ट्रक्शन में यही प्रॉब्लम होती है, रट्टा मार लेते हो, फिर कुछ और लिख के आ जाओ, सोचे लिख दिया, बाद में गड़बड़ होगी। डायग्राम के साथ लिखना भी पड़ता है बेटा, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे इतना डिफिकल्टी नहीं है पेपर में, क्योंकि आपके पास 4 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकली आ जाते हैं, उसमें आपको बूस्ट मिल जाता है पासिंग का। अगर एक होता या 2 होते तो मुश्किल हो जाती शिप कंस्ट्रक्शन में पास करना। 4 आ जाते हैं तो फिर आसान हो जाता है आपको पास करना। सर एक मिडशिप आ जाए, सेक्शन आ जाए, डायग्राम बनाए, कुछ लिख के चले। कुछ क्या, कुछ लिख दो, मतलब कि हम लोग पढ़ते नहीं है, कुछ भी लिख दो, वाह कुछ ऐसे थोड़ा कुछ भी लिख दिया बेटा, हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। सर लिखेंगे कि फ्रेम्स होते हैं, ऐसे फ्रेम होते हैं, वैसे फ्रेम होते हैं। ऐसा नहीं लिखो यार, फ्रेम होते हैं, फ्रेम तो सब में होते हैं, ऐसा कौन सा फ्रेम नहीं होते। स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा भाई। आपको केमिकल टैंकर पूछा तो आप जनरल कार्गो लिख के आ जाओगे अंदर से। नहीं सर, केमिकल टैंकर का ही लिखेंगे कि ऊपर लॉन्गिट्यूडनल सारे ऊपर होते हैं। तो उसके सेलिएंट फीचर्स पूछेंगे तो सेलिएंट फीचर लिखना पड़ेगा ना। तो वो रो के सेलिएंट फीचर पूछे तो उसका स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा।
तो इसमें रट्टा नहीं मारना। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू मग एवरीथिंग हियर। हाँ, वो लोड लाइन में मग करना पड़ेगा, वो तो आपने देखा ही था। लोड लाइन में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लोड लाइन इसीलिए डिफिकल्ट है कि उसमें बहुत सारी मगिंग है, क्योंकि वो रेगुलेशन है ना, तो उसमें सारा मगिंग करना पड़ता है। चलो बल्क कैरियर पे आते हैं। पहले 3D व्यू दिखाएं बल्क कैरियर का। तो कितने लोग भाई बल्क कैरियर में गए हो? कम लोग हो गए, ज्यादा टैंकर वाले होते हैं या कंटेनर वाले, बल्क कैरियर कम होते हैं। तो आपके हॉपर टैंक्स होते हैं कि ऊपर में हॉपर टैंक, नीचे में हॉपर टैंक। आजकल वो नीचे वाला हॉपर टैंक गायब हो गया है, ऊपर ही रहता है। बट नीचे इसलिए रहता है कि आपका कार को डिस्चार्ज करने में आसानी होती है। ऊपर तो चाहिए होता है स्टेबिलिटी के लिए। तो टिपिकल फीचर हो जाता है हॉपर टैंक। इसमें सेलियन फीचर, मेन चीज है हॉपर टैंक। और शेयर स्ट्रेक कई बार राउंडेड होता है, किसी में स्ट्रेट भी होता है। तो हॉपर टैंक का दो फायदा होता है, इसको टॉप साइड टैंक भी कहते हैं। तो हॉपर टैंक का फायदा यह है कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इंक्रीज कर सकता है। लाइक सपोज यू हैव वेरी डेंस कार्गो, आयरन ओर लोड किया, तो योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी रिड्यूस्ड और जीएम हो जाएगा बहुत बड़ा। और जीएम बड़ा होने से इट बिकम्स वेरी स्टिफ, रोलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जीएम को मीडियम करने के लिए हमने हॉपर टैंक में पानी डाल दिया। उससे क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाएगी और आपका रोलिंग इजी हो जाएगा, नॉट वेरी स्टिफ। एक तो वो हो गया। सेकंड हो जाता है सेल्फ ट्रिमिंग के लिए, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज कई कार्गोज में ज़्यादा है, जैसे ग्रेन है, कोल है, तो वो काफ़ी बाहर निकल जाता है, तो उसके लिए ट्रिमिंग गैंग को बुलाना पड़ता है, वो भी खर्चा लगता है। हॉपर टैंक से क्या हो जाएगा, सेल्फ ट्रिमिंग हो जाएगा और एंगल ऑफ रिपोज दब जाएगा। जैसे अब ये जरा आपको दिखा दें, डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, कार्गो वर्क में आपने पढ़ा होगा, अब भूल भाल गए होंगे। तो दिखा देते हैं। Now this is when your angle of repose is high, तो ये काफी बड़ी ढेड़ी बना देगा। So you require trimming so that ये जो space है, the cargo can be adjusted in that space, उसके लिए trimming gang बनाना पड़ेगा। But with your hopper tanks, ये ऊपर तक जाएगा नहीं, because this is going to press it down and you will have a leveling done with this hopper tank. So this is self trimming hatches. अब ये वाले जो है हॉपर टैंक्स हैं, इनमें एक और चीज दिखा दें। So this is hopper plating. That basically this is top side tank plating, and this is bottom hopper tank plating. So this will ease your cargo discharge because ये slide करेगा. जो grab है, this will also slide down. It will not go to bang there. Then this is no, ये जो दो transverse bulkhead will be corrugated, and then this will be a stool plate here below your corrugated bulkhead, and the space here will be stool space. That's a void space, that is for facilitating your discharge. Then you'll have a shudder space, shudder plate here. Shudder is SHEDDER, shudder space plate here. This is shudder plate. This will be at an angle, so that cargo is discharged will not get stuck. तो ये फीचर्स हैं आपके बल्क कैरियर के।
अब आपका डबल हल जब आ जाता है तो ये सिंगल हल वाला है, तो यू सी अ 3D व्यू हियर। ये आपकी हैच कोमिंग आ गई, हॉपर टैंक आ गए, एंड DB टैंक, द bottom hopper tank here, the hopper tank plating, top side tank plating. This is your corrugated bulkhead, और ये जो plating है, that is shedder plate that guides the cargo. It will not get stuck here, it will get just slide down on the lower stool plate. Now when we come to double hull bulk carriers. Now double hull bulk carriers का feature क्या हो जाता है कि again you'll have a double hull here, double bottom तो था ही, double hull आ जाएगा, you'll have stringer plates here that will provide your transfer strength and longitudinal strength also, and hopper tank यहाँ रहेगा, यहाँ डक पाइप डक बन जाता है और यहाँ डक कील आएगी. There's a duck keel here because you don't have a centerline bulkhead here, a centerline girder here. Instead of one centerline girder, you'll have two girders, and the space in between, that will be known as pipe duct. So that's a void space where your pipelines will be there, no cargo there. So certain ships, they don't have a bottom hopper tank, they'll have only top side hopper tank. So now we'll come back to your bulk carriers details. Now this is the Sir, midship section. हाँ सर बोलो. एग्जामिनेशन के लिए कौन सी ड्राइंग बनानी? ये बनानी बेटा, अभी आया है, वो तो मैं 3D समझा रहा था, बनानी ये है. दिस ड्राइंग यू हैव टू मेक. 3D नहीं बनानी है आपको, 3D सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा था. यू जस्ट हैव टू मेक दिस सिंपल ड्राइंग. अगर वो नॉर्मल बल्क कैरियर बोले तो ये, अगर डबल हल बोले तो ये बनाना. ठीक है, डबल हल बल्क कैरियर दिस वन, सिर्फ बल्क कैरियर बोला तो ये वाली बनाना. DJIR Okay, की sir. जो डायग्राम्स है वही बनाना है, ओनली DJIR डायग्राम्स. डोंट हैव टू ड्रॉ एनी अदर बुक डायग्राम. कैंपेनियन तो बिल्कुल नहीं बनाना, मार्क्स नहीं मिलेंगे. अब इसमें क्या है, सिंगल हल है, यू हैव हॉपर टैंक ऑन टॉप, हॉपर टैंक डाउन. यहाँ में आपका शेल प्लेटिंग हो गया, फ्रेम यहाँ हो गया. अब ब्रैकेट जो है यहाँ टेपर्ड है, ये ब्रैकेट भी टेपर्ड है. दिस इज टू प्रिवेंट डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस. That's why this two brackets are tapered. Inside your hopper tank, you'll have longitudinals and stiffeners fitted here. So these are the longitudinals inside the hopper tank, and stiffeners are fitted here. You will not have any longitudinals here. So this is compositely framed bulk carrier. So here the hatch combing is here, the deck plating is here. The shear strake is rounded here, it's not straight. यहाँ भी बॉटम हॉपर टैंक जो है वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू द टॉप हॉपर टैंक. दिस इज हॉपर प्लेटिंग. दीज आर योर लॉन्जिट्यूडनल्स इनसाइड, स्टिफनर्स हियर. फिर आपका DB टैंक आ गया. DB टैंक इज लॉन्जिट्यूडनली फ्रेम्ड. सो इनर बॉटम लॉन्जिट्यूडनल्स, दिस वन इनर बॉटम. बॉटम लॉन्जिट्यूडनल्स आर दीज. इनके बीच में आपने stiffeners लगाया हुआ है. These are the stiffeners here. This is intercostal side girder, this is intercostal side girder. Then there is a pipe tunnel, and below the pipe tunnel you have a keel plate. अगर आपने कील प्लेट यहाँ या कहीं भी लिख दिया तो प्रिंसिपल एरर हो जाएगा, -10 हो जाएगा. ध्यान रखना, कील प्लेट को यहीं करना. नहीं आता तो कुछ नहीं लिखो. So -10. अगर आपने इधर कहीं कील प्लेट लिख दिया तो -10 हो जाएगा, प्रिंसिपल एरर है. याद नहीं है तो लिखो ही नहीं, छोड़ दो. लेकिन अगर प्रिंसिपल एरर करोगे तो -10 हो जाएगा, सीधी बात. आपको पता है ना, प्रिंसिपल एरर नेविगेशन में, स्टेबिलिटी में प्रिंसिपल एरर हो गया तो नंबर गए, तो उसको अवॉइड करो.
So we start with the theory now. अब ये स्टूल स्पेस जो है, इफ यू हैव द साइड व्यू, तो ये आपका कोरुगेटेड ट्रांसवर्स बल्कहेड है, इसके अंदर ये शटर प्लेट है, इस एंगल में रहती है. सो द कार्गो विल जस्ट स्लाइड ऑफ, कार्गो गिरेगा, जस्ट स्लाइड ऑफ हियर, स्टूल स्पेस से स्टूल प्लेट से नीचे आ जाएगा. दिस इज द बल्कहेड स्टूल, दिस इज द स्टूल प्लेट, and here that is a strengthening given to the stool space. So this is the void space here only for facilitating cargo discharge, और कोई इसका फायदा नहीं है. Facilitating cargo discharge. सर ये साइड व्यू है ना सर? वो साइड व्यू है, ये वाला जो था वो साइड व्यू है. फ्रंट व्यू आपको दिखाया था, ये फ्रंट व्यू हो गया, एंड दिस इज द साइड व्यू. साइड व्यू. Now this has got combined framing system or composite framing system, where your longitudinal framing is in the DB tanks and in the hopper tanks, but not on the sides. So you have transverse framing on the sides. Now the breadth of the hatch is about 50 to 70% breadth of the ship. Angle of the wing tank with horizontal is 30 degrees greater than angle of the rest of the cargo. You have a symmetrical tunnel for the passage of piping, that is your duck keel. Whenever the vertical keel is replaced by two longitudinal girders to create a tunnel, and this the distance between the girders, that means the breadth of the duck keel, should not exceed 3 meters apart. In case you don't know about duck keel, मैं जरा दिखा दूँ आपको फोटो. क्योंकि हर बंदा बल्क कैरियर में तो गया नहीं है, टैंकर में डक कील होता नहीं है. लेकिन अगर ओरल क्वेश्चन में आ गया कि कौन से टैंकर में डक कील होता है, तो बताओ भाई, किसको मालूम है? टैंकर में तो डक कील नहीं है. वो ठीक है. और गैस टैंकर डक कील होता है, गैस टैंकर में होता है, करेक्ट. और किसमें? ये लो डक कील की फोटो आ गई. तो कई लोग गए होंगे डक कील पे, गए? कोई गया है? Yes, sir. देखा है सर, एक बार थोड़ा सा देखा था ना. तो रेल होती है यहाँ, और इसकी हाइट बहुत कम होती है, सिर्फ बैंक करेगा इधर, तो इसके ऊपर लेट के जाना पड़ता है. यहाँ पाइपिंग वाइपिंग सारी आएगी, ये हीटिंग कॉयल भी है, हाइड्रोलिक्स भी आएगा, बाकी लाइनें भी यहाँ आती हैं. और कहीं कुछ प्रॉब्लम देखनी है पाइपलाइन में, तो आप फोपिक के आगे से उधर से एंटर करोगे, इंजन रूम तक जाती है, और ये टनल को बंद किया जाता है, अदरवाइज पानी फ्लड कर देगा. तो इंटैक्ट स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है. इफ योर डक कील इज फ्लडेड, देन योर मार्जिन लाइन शुड नॉट बी सबमर्ज्ड. ठीक है. दैट्स व्हाई आई कीप शोइंग दीज फोटोग्राफ्स, क्योंकि क्या है कि गड़बड़ हो जाएगी, समझ नहीं आएगा फिर. क्योंकि शिप कंस्ट्रक्शन में ऐसा है कि एक बार आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा. सो कंटिन्यूटी शुड बी देयर इन दिस सब्जेक्ट. Now transverse webs are fitted in the wing tanks at interval of 3.4 meters, जो आपको दिखाया था. वेब्स बताए थे ना लॉन्जिट्यूडनल फ्रेमिंग में, साइड में जो वेब्स बने हुए थे, दोज वर द ट्रांसवर्स वेब्स. या फिर से दिखाएं? याद है सर. वेब समझ आए कि नहीं? क्या दोबारा दिखाएं उसको? तो दोबारा दिखाते हैं. इसकी बात कर रहे हैं, ये रिंग्स. दीज आर योर ट्रांसवर्स वेब्स. ये ट्रांसवर्स वेब्स हैं पूरे, ये जो पूरे रिंग बने हुए हैं,
That is transverse web. So that has to be fitted between, दोनों के बीच में distance 3.4 meters है, उसकी बात कर रहा हूँ. These transverse webs. So stringers be fitted at 1/3 and 2/3 depth of the tank. Stringers बताया था ना क्या होता है? क्या आप समझ आ गया स्ट्रिंजर क्या होता है? क्या अभी भी कंफ्यूजन है? स्ट्रिंजर समझ आया कि नहीं? लंच से पहले सब बताया था स्ट्रिंजर. यस समझ आ गया ना? ठीक है. So those plates are to be fitted 1/3 and 2/3 the depth of tanks or holes you can say, and you have two longitudinal watertight bulkheads giving minimum freeboard of this type is B100 जो हमने किया है. B100 किया है ना? B60 B100 B100 कितना होता है? उसका फ्रीबोर्ड कितना होगा? ए टाइप का होगा कि नहीं होगा? इसका भूल गए हो यार. सर, अभी ये लोड कैसे लाइन किया होगा? था. ये नहीं होगा सर. एक किया था बी, एक किया था B60 और एक किया था B100 और एक किया था ए. हाँ सर, वो याद है. तो फ्रीबोर्ड कितना होगा? ए के बराबर होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए सब सर. कंफ्यूज हो गए. चलो ये मैं अब नहीं बताऊंगा यार, तुम लोग पढ़ा दिया फिर कंफ्यूज हो जाते हैं. चलो जब आपका कोर्स खत्म होगा फिर से कराऊंगा ना, तब समझ आएगा. भाई अप्रैल बैच को तो समझ आना चाहिए यार, या वो भी कंफ्यूज है? अप्रैल बैच देखो, जितना ज्यादा सब डिविजन होगा उतना कम फ्री बोर्ड होगा. सब डिविजन कम होगा, फ्री बोर्ड बढ़ जाएगा, सीधी बात. So the vessel has two longitudinal watertight bulkhead giving minimum freeboard of this type is B100. Longitudinal bulkhead का मतलब समझ आया क्या? अभी भी समझ नहीं आया? ये समझ में आ गया. समझ में आ गया. सपोज आपका एक ही हो, ठीक है, तो आपका सेंटर होल्ड होगा ही नहीं. नॉर्मली अगर आपका लॉन्जिट्यूडनल बल्कहेड ही नहीं हो तो फ्रीबोर्ड आपका सबसे ज्यादा होगा. अगर लॉन्जिट्यूडनल बल्कहेड दो हो गए तो फिर आपके छोटे छोटे होल्ड्स काफी हो जाएंगे, उससे आपका फ्रीबोर्ड रिपोर्ट कम हो जाएगा. कम हो जाएगा. सब डिवीजन बढ़ेगा, फ्रीबोर्ड कम हो जाएगा. सीधी बात है. इसमें लोड लाइन में इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड करना है. अगर रप्चर होगा तो सब बॉयंसी एक ही होल्ड की जाएगी, बाकी तो रहेगा. प्रोग्रेसिव फ्लडिंग विल बी रिड्यूस्ड, राइट. और रप्चर होगा तो इंटैक्ट बॉयंसी बेटर रहेगा रादर दैन सब डिवीजन ना हो, उसमें आपकी इंटैक्ट बॉयंसी काफी रिड्यूस कर देगी. बॉयंसी आपकी रिजर्व बॉयंसी बचेगी नहीं, क्योंकि वो फ्लड कर देगा पूरा कंपार्टमेंट. Now additional thickness is on the top of DB when they are loaded with or unloaded by grabs, क्योंकि ग्रैब से वो बैंग करेगा टैंक टॉप के ऊपर, तो उसकी थिकनेस को बढ़ाना पड़ता है. The double bottom structure with web spacing will be 3.45 meters or 3.5 meters होगा. Classification for heavier cargo and alternate hold हो सकता है. As ships will have at least the following transverse bulkheads, that is collision bulkhead forward, aft collision bulkhead. So these two bulkheads will define the boundaries of engine room. In ships with engine room are midships, a bulkhead forward of the engine room when it is aft. पहले के जहाज में क्या होता था, मिडशिप अकोमोडेशन होता था, वही प्रॉब्लम होती थी. आजकल मिडशिप अकोमोडेशन नहीं है. So in ships with electrical propulsion system, both the generator room and engine room shall be bounded by watertight transverse bulkheads. Now your definition of bulk carriers with DB in concern with application of unified requirements S17, S18, S20. That is in discussion with International Association of Classification Society.
So that has been decided that the minimum width of double hull should be greater than equal to 76 centimeter for the ships to be considered as double hull. And the width should also be enough to allow access and inspection. If you have got a hybrid bulker with certain holds single hull and other holds double hull, then that hybrid bulker will be considered as single skin vessel. Now the SOLAS chapter 12 requires bulk carriers, installation of water level indicators in cargo holds, and ballast tanks and void spaces equipped with alarms for maximum levels. ये आपने कार्गो में पढ़ा होगा, दैट इज इन आई थिंक आप लोग ने सेकेंड मेट्स में भी पढ़ा होगा कि आयरन ओर जब कैरी करते हैं ट्रांसपोर्ट टीएमएल आपका एक ट्रांसपोर्टेबल मॉइस्चर लिमिट्स होता है. So if it exceeds 10%, then the iron ore fines will become liquefied and behave like a liquid cargo, and that can cause a loss of stability for the vessel. That's why masters refuse TML more than 10%. वैसे guidelines is 8%. Do not allow more than 8%. For that reason, you're supposed to have water level indicators in cargo holds. Now, the means to drain and pump bilge water from void spaces and ballast tanks, which are part forward of the collision bulkhead, shall be able to be activated from closed space and always accessible. So, your hopper side tanks, they are used for ballast or for stability when carrying certain cargoes and bulk carriers. They are also referred as topside wing tanks or bottom hopper tanks. These hopper tanks are stiffened by heavy web, which we have seen. These web sections are provided at frames having plate floors, and they are repeated every 3 to 4 frames. Stiffeners of the bilge and hopper plate are welded to the web frame, and the web plate is further stiffened by flat bar stiffeners to prevent distortion. Flat bar stiffeners का मतलब है those steel sections which are flat. Now, duck keels are preferred in these ships which provide enough space for passage of pipelines, so they can also be called as a pipe tunnel. But the structural purpose is to transmit the weight to the ship to the keel blocks when dry dock. So basically, जब आपका dry docking होता है, तो that center girder is supposed to transmit that weight. तो tankers में center girder है that is transmitting the weight to the keel blocks. So अगर हमने 2 center girder नहीं लगाया तो उसके in lieu of center girder we'll have 2 center girders. तो center girder 2 लगा दिए so that they can transmit the stresses to the keel block. अब वहां जगह बच गई तो उन्होंने आइडिया लगाया भाई इस जगह को कौन यूटिलाइज करेंगे, उसमें पाइपलाइन लगा देंगे. दैट्स वाई वो डक कील बन गया और पाइप टनल हो गया. Now, thickness of duck keel plates is higher than the adjacent plating by at least 5 mm. The tank top plating and the outer bottom plating are held together by vertical plate structure called the plate floor, जो आपको बताया था. Circular perforations on the plate floor are provided for reducing the weight of the structure, which is lightning holes. Oval perforations are elliptical to provide human access for maintenance operations. Side shell plate is stiffened transversely instead of longitudinally by side frame, which is usually L section. Side frame is connected to hopper tank and wing tanks by brackets, जो आपको बताया थे. ये जरा डायग्राम दिखा देते हैं. ये जो ब्रैकेट थे, ये ब्रैकेट्स हैं, दे प्रोवाइड कंटिन्यूटी. अब इसमें फ्लैंजिंग कर देते हैं. फ्लैंजिंग बता देते हैं व्हाट इज फ्लैंजिंग. कोई भी सेक्शन को हम कट करके ये साइड में दिखाते हैं. आई टेल यू व्हाट इज फ्लैंजिंग. क्योंकि कई टर्म्स हैं जो आपके ऊपर से जाना शुरू हो जाएंगे, फिर आपका इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाएगा. सो सपोज एक ब्रैकेट है, एक स्ट्रक्चर बना दिया
सपोज ये ब्रैकेट टेपरिंग ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो इसके ऊपर इसको हमने थोड़ा सा 90 डिग्रीज कट मार दिया, टेढ़ा कर दिया इसको, ऐसे 90 डिग्रीज टेढ़ा कर दिया ऐसे। सो दिस प्लेट को 90 डिग्री टेढ़ा करने से क्या है, द स्ट्रेंथ विल बी मोर, दैट इज नोन एज फ्लैंजिंग। कोई भी प्लेट, अगर सपोज ये वाली चीज है, ये है आपका प्लेट, इसको मैंने एक एज को ऐसे टेढ़ा कर लिया, ये दिखा देते हैं टेढ़ा कैसे, ऐसे मोड़ दिया, तो जब मोड़ दिया इसका एज, उसको फ्लैंजिंग कहते हैं। सो दिस मोड़ने को हम फ्लैंजिंग कहते हैं। सो दैट इज स्ट्रेंथनिंग द एज ऑफ द प्लेट। So the brackets are flanged at the free ends are provided to provide stress flow from plate to web frames. So flanging say stress can be can flow and it will not lead to accumulation of stresses there. Shear strake in the plate is a plate that connects the deck plating and the side shell. Thickness of shear strake is normally 3 mm more than the deck plate, and this because of the distance from neutral axis जो बताया था. A lot of stress concentration occurs. Hence, the higher plate thickness is required to keep the stress levels within design limits. So, hatch combing is provided around the hatch opening, and the height and thickness of hatch opening above the main deck is described by class rules. जो आपको बताया था, position 1 में 600 mm and position 2 is 450 mm. They are supported by brackets to maintain stress flows from combing to the deck plate, जो green color की आपको वीडियो में दिखाए थे, those were the brackets. Now for double hull bulk carriers, company prefers double hull designs not because of the increased safety of cargo contamination, but due to increased stability of these designs. So this is your double hull bulk carrier. You have stringer plates here, and there's a duck keel here, duck keel here. There's a pipe duct here. You have hopper tank here. They may not have these hopper tanks at the bottom here. The pipe duct, the duct keel is here. Now the space within the outer and inner skin is strengthened by transverse frames and longitudinal stiffeners running around the ship's length. Stringers are used to decrease the span and depth of the transverse frames, and they also divide the double space into multiple wing tanks. So wing tanks at various heights are used for ballast spaces, and these designs do not require hopper tanks, therefore increasing the space for cargo contamination. However, topside sloping tanks are provided to prevent cargo shifting, and that is also provided for trimming. The left side of the figure shows an ordinary frame without plate floor. ये जो पुराना दिखाया था, तो यहाँ without plate floor दिखाया. This is to, दोनों में same होगा. They're just showing that this kind of solid plate floor will be there. So intervals at every 3 or 4 frames, web frames are provided with plate floors or solid floors. Pipe ducts are provided within the duct keel and uppermost part of double hull spaced for carrying oil or ballast water. So that is your bulk carrier. तो bulk carrier में questions है तो पूछो भाई. So transverse webs in wing tanks. Transverse webs in wing tanks basically you can say the webs जो है आपके, अब जैसे ये वाले हैं, this is double hull, but suppose इसके 2 longitudinal bulkhead बना दिए, तो इनमें wing tanks तो होंगे नहीं. There will not be wing tanks, but there will be the, यहाँ आपका space दिया हुआ था,
वेब फ्रोज आर प्रोवाइडेड प्लेट फ्रोज दिस विंग टैंक्स कहाँ लिखा है अब? अच्छा ये वाला विंग टैंक्स मतलब दिस इज योर डबल हल की बात कर रहे हैं। तो इसमें वेब्स ऐसे दिए हुए हैं, ये ट्रांसवर्स वेब्स ये दिए हुए हैं। Because your double hull space can be considered as wing tanks where your ballast water is stored. So they can be considered as wing tanks. Suppose ये तो आपका होल्ड है, तो this can be considered as wing tanks. तो इसमें आपकी स्पेसिंग क्या है वेब फ्रेम्स की? 3.4 to 3.5 मीटर्स अपार्ट रिग्स बन जाती हैं इसमें। 3.5 meter apart this transverse webs. हाँ, Okay. टैंकर्स में VLCC में वही ट्रांसवर्स वेब्स 5 मीटर तक चली जाती, छोटे वाले में 3 एग्जैक्टली लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये बता रहा हूँ कि जो वेब फ्रेम्स की स्पेसिंग है टैंकर्स में 3 से 5 मीटर्स होती है। बल्क कैरियर जनरल कार्गो ऑलमोस्ट 3.5 3.4, इसमें कोई गलत नहीं करेगा आपका। 3.5 3.7 ऐसे भी लिख दिया, कोई उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। VLCC में वही स्पेसिंग 5 मीटर्स हो जाती है। So that is your bulk carrier. आज और नहीं कराते भाई, अब तो 2 बहुत हो गए, तो हर हाँ एक सर. क्लास में आई कैन टू, क्योंकि बहुत सारे हैं अभी आपके। इसके बाद आपका ओबो आएगा, केमिकल टैंकर आएगा, बहुत सारे आएंगे, गैस कैरियर्स आएंगे, LPG LNG आएगा, रोरो वेसल आएगा, कंटेनर वेसल आएगा। कंटेनर वेसल में भी 2 टाइप आएंगे, काफ़ी सारे हैं। पर ज़्यादातर आपका जो ड्राइंग आता है उसी का आता है, मिडशिप सेक्शन का ही आता है ज़्यादातर ड्राइंग एंड एक्सप्लोरेशन वही आता है। हाँ सर, उसमें पास पेपर में वही हाँ, सारे पेपर कंटेनर में ये वही सब. आता है, आपका तो और कोई ड्राइंग तो है नहीं, नहीं सर. ड्राइंग में यही आता है और ये मैंडेटरी है, ड्राइंग इज मैंडेटरी। चलो वील टेक इट ऑफ टुडे, आज के लिए बहुत हो गया, आराम करो भाई। ओके. ओके देन, ओके सर. ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय।